आजा बिस्मिल्लाह। दी मौत दिया देता है लब के दर देता टकरा मारे दी रह गई है ज़ैनब वीर दी मौत दिया घड़िया घड़े दी रह गई वीर के बालाच हर्ष बरदा सामने भड़ी ते हाय पुसदा उड़ते गाजी आवे हाय उड़ते गाजी आवे बल बल सजनी रह गई है ज़ैनब वीर दी मौत गए है ज़ैनब वीर दी मौत दिया घड़िया घड़े दी रह गए नप के दी मौत दिया घड़िया घड़े दी रह गए है ज़ैनब वीर दी मौत दिया दिया घड़िया घड़े दी रह गई है ज़ैनब वीर दी मौत दिया घड़िया घड़े दी रह गई नब के दर सवेदा है नब के दर सवेदा तकरा मरेंदी रह गई है ज़ैनब वीर दी मौत दिया घड़िया घड़े दी रह गई है ज़ैनब वीर दी मौत दिया घड़िया घड़े दी रह गई लब शबीर कहल गए बैन पानी रो पड़ी गुरबत जो बौनी बाड़ी तीन दिना तो प्यासी है तीन दिना तो प्यासी पानी मांगे दी रह गई है ज़ैनब घड़िया घड़े दी रह गई है ज़ैनब
पीर दी मौत दिया देदा है नप के दर देदा टकरा मरेंदी रह गई हाय ज़ैनब पीर दी मौत दिया घड़ियां घड़ेंदी रह गई ऐ आनो मोहम्मद छुपा कर मैं दीन तुम्हें रोऊंगी और मेरे लिए भी आंसू ना तुम बहाना ऐ आनो मोहम्मद ऐ आनो मोहम्मद ऐ आनो मोहम्मद ऐ आनो मोहम्मद। इंशाअल्लाह हमारे पास किबला काबा मौजूद है और ब्रदर नज्जार हैं और बेटी फातिमा जैदी ये 3 मिनट की स्पीच करेंगी। बाआवाज़ बुलंद सलावत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिना अल-हुसैन अलैहिस्सलाम। Peace be upon you, Imam Hussein, and on all those who sacrificed themselves for your cause. I salute you for as long as I am alive. Peace be upon Hussein and all the sons of Hussein and the children of Hussein and the companions of Hussein. Peace be upon you, my master, O messenger of God. I express my condolences for the martyrdom of Hussein. Peace be upon you, my master, O leader of the faithful. I express my condolences for the martyrdom of your son. Peace be upon you, O Fatima. I express my condolences upon the martyrdom of your son Hussein. Peace be upon Aba Muhammad al-Mujtaba. I express my condolences upon the martyrdom of your brother Hussein. Peace be upon all of you. May peace be upon Imam al-Mahdi. My condolences upon your grandfather Hussein. 1,439 years ago, a man stood alone facing an army of over 30,000 men, a man who had sacrificed everything he had to save the religion of Islam, to save the morals of the Quran, and to save the morals and the teachings of the Ahlul Bayt and Islam. That sacrifice has shaken humanity to its core today. That message has been brought alive once again with these acts of mourning, grieving, and lamenting. We have once again renewed the life and message of Karbala, to renew the life, values, understanding the meaning and the spirit, which is what Imam Hussein would have wanted. We are gathered here today in this square to show the world who is the savior of mankind, who is this king of sacrifices, the light of patience, and the embodiment of strength and courage. जिसकी रगों में फातह बदरो हुनैन है, जिसकी रगों में फातह बदरो हुनैन है, उस सूरमा का इसमें गिरामी हुसैन है. Brothers and sisters, the unity that we are projecting is the highlight of the message of Imam Hussein ibn Ali alayhi salam. Unite with the oppressed to stand against the oppressors. In our time, the aggressors and the tyrants such as ISIS, Boko Haram, Daesh and Al-Qaeda, they are afraid of the global message of Karbala that is touching the hearts of millions every day with Azadari. Azadari is the act that has been taught to us by our imams, ulamas, mothers, and we should never forget that until the day of judgment, this is the way that we should serve our imam. We are the followers of Hussein, the followers of those men who sacrificed their lives to save Islam and humanity. Hussein established a cause of justice, of hope, peace, freedom from tyranny and oppression. Today, we stand together in his honor, in his commemoration, and we declare that we too are going to strive together. We are either Christians, Muslims, or followers of any faith, because Hussein has spread the message that peace is for
is the justice to every individual. And now it is our time to make together to commemorate the martyrdom of the man who was deprived of water for several days, who fell on the tips of the arrows, who had an unaccountable amount of wounds on his body, whose body was trampled beneath the horses of the enemies. Let us join together as the Ummah of Hussein and project our voices of Labbaik so loud that they reach the grounds of Karbala. Labbaik ya Hussein! 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 गुजारिश करूँगा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आदि साहब से कि तशरीफ़ लाएं और अपने जद को पुरसा दें। السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Today, as you know, is the day of Ashura. This is a day of condolences, a day of sadness, a day of remembrance for the greatest tragedy that befell not just the Muslims, not just Ahlul Bayt, not just humanity, but the greatest tragedy that befell all of creation. It is our teaching that many years before Karbala, the Prophet mourned for the martyrdom of Imam Hussein and his companions and his family. Even before Islam, our previous prophets, the angels of Allah from the heavens, they would ask Allah for the blessing to be able to mourn the martyrdom of Imam Hussein. Angels would consider it an honor to come down from the highest heavens and come to Karbala and to pay their respects and give their salutations to the Imam from Karbala. And we have been honored to be alive in the nation and the community of the Prophet of Islam. Allah has honored us with the recognition of our Imam. And so before we do anything else, let us offer our gratitude to Allah that He has given us that blessing, He has given us that honor, He has given us that unique tawfiq, which is more valuable than our life itself, than any material or any other blessing that we may have. The Quran tells us that the basis of faith is love. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. If you love Allah, then you will follow the Prophet. And if you follow the Prophet, then Allah will love you. It is love that is the basis of our Iman. It is not an action. It is not a doctrine. It is not a word. It is not a deed that is the basis of our faith. It is love. And it is love which ensures that our faith will always be constructive, will always be unifying, will always be beneficial for humanity. And it will then you can turn to the Middle East today. The shrine of Imam Hussein today is a place where all Muslims and even the non-Muslim communities of the Muslim world find safety, they find sanctuary, they find refuge when their own neighbors turn them out of their cities. The Haram, on the day of Ashura, there was only one person who could not have safety and security, and that was Imam Hussein himself. On the eve of Ashura, the Imam
called companions, you have shown your loyalty. You have shown your sincerity. I have forgiven you of your pledge of allegiance and all your obligations. You can go and I will stud. They're not looking for your blood. So I give you permission to save yourselves. And then one after the other, the soldiers of the Imam, the companions of the Imam, they stood up and the Imam turned to the brothers of Muslim ibn Aqil. He said that one martyr from your family is... And they said, how we will face your grandfather and your mother on the day of judgment. Imam did not say that I give you permission to leave. There was only one was the most beloved one to the Imam, his son Ali Akbar, who was the... When he would see Ali Akbar, then he would say, oh my son, I wish to see you martyr yourself and sacrifice yourself for the path of Islam on the day of Ashura of justice. Then we offer ourselves and the most dear things to ourselves for the sake of that truth, for the sake of that mission. Ali Asghar went and he did battle, but Imam Hussein, who had sent him with such decisiveness, took some steps behind him, and when Ali Akbar felt that his father was following him, he said, Father, did you not bid me farewell already? Why is it that you are following me? And the Imam said, my son, you don't have a son. So you don't know what it is for me to finally look at your face for the last time. Ali Akbar, I have bid you farewell, but as you do battle, come close to me every so often. Look in my direction so I can know that you are still alive. There was no one whose battle the Imam watched more closely than he watched the battle of Ali Akbar. There was no one whom the Imam saw. Every wound, every injury, every blow of a sword, every fall of an arrow, every rock that hit the target, then he saw the wounds of Ali Akbar, and every wound that fell on the body of Ali Akbar, it was as if that wound was falling on the heart and the soul of the Imam himself. Until a time came when Ali Akbar was no longer able to steady himself on his horse. And as he leaned down into his horse, it is said in history that his horse was lost in the commotion and went among the enemy soldiers. And now Ali Akbar was faint, barely conscious. All of those who had a lingering animosity against the Prophet and against Islam, they surrounded Ali Akbar and attacked him all together. He called out to his father that, oh my father, I had asked you for a sip of water. Let me console you with the promise that I see my grandfather, the messenger of God, standing in the heavens, calling me and holding a goblet of water from paradise. And oh my father Hussein, if it is difficult for you to bear my martyrdom, then know that I have a message for you from the Prophet of Islam, from your grandfather. He is telling you that he has been watching your battle from the beginning of this morning, and he is calling you to rush towards him. Rasulullah says, Ya Hussein, ajjil al-quduma ilayna, rush towards us. There were many more steps that the Imam took before he was finally able to embark on that heavenly journey. There was, but perhaps more painful than all of those martyrdoms was when the Imam came to his sister Lady Zainab, and he said that Zainab, I bid you farewell. After now, you are to be Hussein, and you are to be Abbas, and you are to be Ali Akbar, and you are to be the source of strength and support for all of those who are widowed, for all of those who are orphaned, for all of those who are suffering. This is the day when we offer our condolences to Imam Hussein till the day of judgment. Once again, let us recite our salutations upon Imam Hussein, all together in a loud voice.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين We have to leave this place 10 to 12. And now I request Brother Ali al-Najjar to address the Majlis. God, the most gracious, the most merciful. I begin in His name, in whose name all things begin. And may the peace and blessings of God be upon His prophets, Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Today is a day of both mourning and a day of celebration. Not only is it a day of tears, but it's a day of great smiles. You might be telling me, why is it a day of celebration? We understand it's a day of mourning, as Maulana and as many speakers before me just said. It's a day to cry, it's a day to sob, it's a day to weep. However, at the same time, this night is one of the greatest nights to celebrate the victory of oppression against the oppressed. Indeed, it is the victory of what? Of indeed the oppressed ones against the oppressor. It's the victory of indeed evil, or of good against evil. It's the victory of hope against despair. It's the victory of what? Of God against the devil. Today is a day for the world to celebrate. Today is a day that Jesus is celebrating. Today is a day that Moses is celebrating. Today is a day that Muhammad is celebrating. Now yes, this is the 10th of Muharram. This is the day where the grandson of the Prophet Muhammad was beheaded ruthlessly on the sands of Karbala by the same hands who are carrying out bombs in Pakistan every day. By the same hands that are carrying out killings in Burma every single day. By the same hands that are killing people in Afghanistan, in Africa. This is the same hand that is causing evil all across the world. It is our duty to let the world know that were it not for Hussein, goodness wouldn't be known. Were it not for Hussein, hope wouldn't be known. Were it not for Hussein, there would be no such thing as victory. For who? For the oppressed. And that's why I remember that indeed the words of Mahatma Gandhi echo with us until tonight. The words which come and say, I learned from Hussein how to be oppressed yet still be victorious. Don't take these words for lightly, brothers and sisters. Gandhi was a non-Muslim. Yes, Hussein wasn't a part of his religion, but he saw that indeed he was a part of Hussein. And this is the big difference between Gandhi and for example, many Muslims today. In other words, we have to let the world know of what's happening with ISIS, for example, and Boko Haram and Al-Qaeda. These are all what? The same hands that killed Imam al-Hussein alayhi salam. And we are victims of ISIS as much as anyone out there in the world. And that's why we say, Labbaik ya Hussein! Labbaik ya Hussein! Don't say silently, Labbaik ya Hussein! Labbaik ya Hussein! We look today in the eye of evil, and we tell them the same words of Zainab, daughter of Amir al-Mu'mineen. We tell them, Ya Yazid, kit kaidak, was'a sa'yak, fama ayyamuka illa adad. وما شملك إلا بدد وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. We tell them, oh ISIS, oh Al-Qaeda, oh Boka, don't stay comfortable. Your days are few. Your supporters are numbered. You're going down very soon. ISIS is we're getting rid of them in Mosul. We're getting rid of them in Iraq. And very soon we'll get rid of them and everybody that has anything to do with them. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. Hussein, brothers and sisters, on this night,
we need to make a number of things clear to the world. That Imam al-Hussein isn't some exclusive cultural concept for you and I, no. And let us not make him into this statue which we open up every year. We look at him and we mourn, then we close it and we put it back in our rooms. No, Imam al-Hussein alayhi salam is a universal concept. He's a godly concept. He was there for the Christians. He's there for the Jews. Even the atheist has much to learn from Imam al-Hussein alayhi salam. And that's why you find today on this last note, yes, Imam al-Hussein alayhi salam namely was a man of God. Let us keep this in mind. This is the primary label of Aba Abdullah. Do you know how many people tried to stop Imam al-Hussein alayhi salam on his way to Karbala? Nearly 13 places that Imam stops. In, for example, Safa, in Udayb al-Hajanat, in Maqasir, for example, in Qasr Dhat al-Maqatil. For example, Imam stops in Nainawa. Imam stops in, for example, a number of other places. Imam alayhi salam, time in, time out, was stopped. Do you know what he would tell them? He would tell them, لَقَدْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرَانِ قَتِيلًا وَلَقَدْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرَاهُنَّ سَبَايًا. He says, yes, I understand I'm outnumbered. I understand I'm going from 72 to 30K. However, Allah wants to see me a martyr. Allah wishes to see Zainab taken as a prisoner of war. Imam al-Hussein, brothers and sisters, was a man of God. We have to make this clear to the world. He wasn't a man of Islam simply. Nor was he simply a man protecting the message of Muhammad. No. I tell you, and I'll put money on it, and I'll challenge anyone out there in the world today. Were it not for Hussein, Jesus wouldn't be known today. Impossible. No way. Mustahil. Moses wouldn't be known were it not for Hussein ibn Ali. And this is the problem that history has fell in time and time out. We forget the teacher and we remember the student. Yes, Imam Sadiq, who's Imam Sadiq? I know Abu Hanifa, I know Malik, and I know other people. Don't tell me of Imam Sadiq. Imam al-Hussein alayhi salam is a victim likewise. Imam al-Hussein is the teacher. Every other freedom fighter out there today is nothing but a student. Labbaik ya Hussein. तेरा सजदा सजदों की इंतहा है शबीर तेरा सजदा सजदों की इंतहा है कई बार तीर उसके हाथों से गिरते देखा कई बार तीर उसके हाथों से गिरते देखा खाता है खौफ देखो खाता है खौफ देखो असगर से हुरमला है शबीर तेरा सजदा सजदों की इंतहा है शबीर तेरा सजदा सजदों की इंतहा है अब्बास तेरे सर ने देखा है कैसे मंजर अब्बास तेरे सर ने देखा है कैसे मंजर एक नेज़े सर बुलंद है एक नेज़े सर बुलंद है एक नेज़े पे रिदा है शबीर तेरा सजदा सजदों की ढूंढूं कहाँ कहाँ पर तेरी लाश को मैं कैसे ढूंढूं कहाँ कहाँ पर तन्हा हुसैन रन तेरा सजदा सजदों की इंतहा है होने हुसैन से ही होने हुसैन से ये शाम आई औलादे सैयदा पर कैसी ये शाम आई औलादे सैयदा पर कैसी ये शाम आई औलादे सैयदा पर कैसी ये शाम आई औलादे सैयदा पर सज्जाद रो रहे हैं ज़ैनब से मुँह छुपा कर कैसी ये शाम आई औलादे सैयदा पर कैसी सज्जाद रो रहे हैं ज़ैनब से मुँह छुपा कर कैसी ये शाम आई औलादे सैयदा पर
सैयदा पर कैसी ये शाम, औलाद सैयदा पर बाजू कहीं पड़े हैं, लाशा कहीं पड़ा है, ज़ैनब की बेबसी पर गाज़ी तड़प रहा है, रोती है बेकसी भी फर्शे अज़ा बिछा कर, कैसी ये शाम आई औलाद सैयदा पर, कैसी औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, पर कैसी ये शाम आई औलाद सैयदा पर, कैसी ये शाम आई ज़ैनब से मुँह छुपा कर, कैसी ये शाम आई औलाद सैयदा पर, कैसी ये शाम आई औलाद सैयदा पर, सरिये कहने लगी वो दुखिया, ज़ैनब उजड़ गई है कर वो भला बसा कर, कैसी ये आँखों का हो गया रुखसत, मुझको आता नजर नजर खैमा, लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे, लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर तेरी शादी का था जिसे अरमा, कैसे झेले कि वो तेरा सदमा, तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, तेबर अकबर मेरा शहर हवाला अकबर, जिससे 18 साल पाला था, कैसे देखे कि वो तेरा लाशा, तेरी शादी का था जिसे अरमा, कैसे झेले कि वो तेरा सदमा, तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर लुत्फ जी ले मैं अब कहाँ, अकबर दिल से उठती है ये फुगा, अकबर सुबह आशूर दी जो तूने खून रुलवा गई अज़ा, अकबर सूरत बुलाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मेरा शेर हवाला अकबर, अकबर है बेटा बाप तेरा ज़ईफ़ है कितना, दूर आँखों का हो गया रुखसत, मुझको आता नज़र खैमा, लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे, लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे, शेर हवाला अकबर, अकबर मेरा शेर हवाला अकबर, इससे 18 साल पाला था, कैसे देखे कि वो तेरा लाशा, तेरी शादी का था, तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठे, अब्बास है वफा से, अब्बास से वफा है, अब्बास है वफा से, अब्बास से वफा है, अब्बास है वफा से, अब्बास से वफा है, ऐ मेरे अलकमा जो सका बना हुआ है, ऐ मेरे अलकमा जो सका बना हुआ है, शबीर का सहारा, शबीर का सहारा, ज़ैनब का आसरा है, अब्बास है
वफा से वफा है, अब्बास है वफा से, अब्बास से वफा है। और जितना भरा था पानी उतना ही खून बहाया, जितना भरा था पानी उतना ही खूब आया। दरिया का उस जरी ने, दरिया का उस जरी ने एहसान कब लिया है, अब्बास है वफा से, अब्बास से वफा है। मरने चला जो गाजी जनाब ने ये सदा दी, मरने ने ये सदा दी, बाजू बनेंगे पानी उतना ही खूब बहाया, दरिया का उस जरी। चले यार, अरे मेरे पूरा गुजरा है ना, पूरा
ज़हूर भला करे वक्त दर पुत्र अता करे है खालिक दे हुसैन हमें क्यों पुत्र दिलाज के चला क्यों पुत्र दिलाज के चला करबल तो आप दिला करे वक्त दर पुत्र अता करे खालिक अपने पैगाम बरदा एक बार ज़हूर भला करे बर पुत्र सफर चला नाम मौला खालिक अपने कयाम खालिक अपने पैगाम बरदा एक बार ज़हूर भला करे पुत्र अता करे खालिक अपने पैगाम बरदा एक बार ज़हूर भला करे नकुवत बर पुत्र अता करे खालिक अपने पैगाम बरदा एक बार ज़हूर भला करे नकुवत बर पुत्र अता करे खालिक अपने पैगाम बरदा एक बार ज़हूर भला करे नकुवत बर पुत्र अता करे खालिक अपने ए मालिक दे हुसैन हमें वादा हर हाल निदास दिया बदले में थोड़े बछड़े दा मैं बैतुल हक बना सकदा भी पुत्र दिलाश किरे चेता भी पुत्र दिलाश किरे चेता करबल तो आप निगाह करे हर पुत्र अता करे खालिक अपने पैगाम बरदा और ज़हूर भला करे लाल वाला बैनर को क्लोज एक ले अच्छा बोर्ड है ना खालिक अपने मैं इसको एंड कर दूँगा। एक बार ज़हूर भला खालिक अपने पैगाम बरदा एक बार ज़हूर भला करे ये दो बच्चे यार इनका मैं नीचे आके शॉट लेता हाँ नीचे भी ले सकते हाँ हाँ मरदा एक बार देखिए पानी बांट रहे हैं इनको दे देंगे हैं। आप ले लो मैं ले लेता एक शॉट चल पहले मैं उतर जाऊँ बस रेडी शिकागो डाउनटाउन में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर मासूम तमाम बारगाह शिकागो के ज़हरा तमाम नौवें आशूरा का मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ और इस जुलूस में आज हज़ारों की तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की।
इस्लाम को बेदार तो हो लेने दो, कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अंसार रिजवी, सफीर पाकिस्तान, जियो टीवी, शिकागो। जी नाज़रीन, मैं हूँ अंसार रिजवी, नुमाइंदा सफीर पाकिस्तान, जियो टीवी इसमें शिकागो डाउनटाउन में मौजूद हूँ। और आज यहाँ पर मासूम इमाम बारगाह शिकागो के ज़ेर एहतमाम यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ और इस जुलूस में आज हज़ारों की तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। उलमा कराम ने तकारीर की। इसके अलावा जुलूस के तमाम रास्ते नौहा खां हजरात नौहा खानी करते रहे। अंसार रिजवी, सफीर पाकिस्तान, जियो टीवी, शिकागो। जिनाजी में शिकागो डाउनटाउन में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर मासूम इमाम बारगाह शिकागो के ज़ेर एहतमाम यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ और इस जुलूस में आज हज़ारों की तादाद में मोमिनीन और मोमिनात ने शिरकत की। उलमा कराम हजरात ने तकारीर की। इसके अलावा नौहा खान और अंजुमन ने जुलूस के तमाम रास्ते नौहा खानी और सीनाजनी की और लोगों ने जनाब सैयदा को उनके दाल का हिस्सा दिया। इस्लाम को बेदार तो हो लेने दो, कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अंसार रिजवी, शिकागो, USA। ज़रा नज़र में रखें, डॉक्टर सफदर या शमीम साहब भी दिखें। हमारे यहाँ से बाथरूम जाना था कोई, एक सेकंड रुकेंगे, सामने में बैटरी से हो गया। अभी एक घंटा खींचना है। I saw them. I saw them. They're not leaving. They're not leaving. You have me out. You know, last year they कांपते हाथों में सूखे हुए प्याले रोए, कांपते हाथों में सूखे हुए प्याले रोए। बेड़िया कोई कभी पाँव के छाले रोए, बेड़िया पाँव के छाले रोए। झूलने वाले तुझे कैसे बताए कोई, झूलने वाले तुझे कैसे बताए कोई। हाय झूलने वाले तुझे कैसे बताए कोई। किसका दर्द तुझको तेरे चाहने वाले रोए, किसका दर्द तुझको तेरे चाहने वाले
मेहमान इमाम मजलूम आज शिकागो इमाम मसूद से जुलूस से मजलूम करबला बरामद हुआ जो शिकागो डाउनटाउन में अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ थॉमसन प्लाजा पर इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसमें शिकागो में सब अंजुमनों ने हिस्सा लिया। मोमिनात का टर्न आउट 3000 से ज़्यादा था। इससे रिकॉर्ड मासूम एंड इन शिकागो हिस्ट्री। इंशाअल्लाह अगले सालों में गर्मियों का मौसम आ रहा है, मजलूम को पुरसा देने के लिए लोग लोग आएंगे और ये रवायत 1400 साल पहले इमाम मजलूम के हक़ में आवाज़ उठाने की पड़ी थी। इंशाअल्लाह बयान हैदर करार इसको जारी रखेंगे। हम शिकागो के तमाम मुसलमान तमाम फ़िरक़ों के हम शुक्रगुज़ार हैं। उनमें से बहुत से लोग जो हैं उन्होंने यहाँ आकर हिस्सा लिया और इमाम मजलूम को खराज अक़ीदत पेश किया। मोमिनीन व मोमिनात दरस हुसैनी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये रवायत ये जुलूस अब 30 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है और इंशाअल्लाह क़यामत जारी रहेगा। इमाम हुसैन का काम रहेगा, हम नहीं रहेंगे। अस्सलाम। या अब्बास शिकागो में मौजूद हैं। इंतहाई अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन उस अज़ीम कुर्बानी की याद ताज़ा कर रहा है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने मोमिनीन व मोमिनात हक़ के मुकाबले में बातिल के सामने मोमिनीन व मोमिनात अपना रुख इस तरफ कर लें, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और ज़ियारत पढ़ के इंशाअल्लाह हम डिस्पर्स हो जाएंगे और अपने अपने इमाम बारगाहों में तशरीफ़ ले जाएं और स्टिकर भी जो है हमसे ले लें, बाद में ऐलान करते हैं। मुतवज्जो है ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह वल जान, अस्सलामु अलैका या मज़हरुल ईमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या कातिअल बुरहान। मासूम की बसें तैयार हैं। ख़वातीन, जो ख़वातीन मासूम की बस में आए थे, ये बसें सामने खड़ी हैं इस तरफ, और एक मर्दों की बस है और एक ख़वातीन की, और पीछे वाली बस जो है वो ख़वातीन की है। ये पहली बस मर्दों की है। लेकिन हजरात वही लोग बसों में बैठे जो आए थे। It's just like I kept repeating myself. So I'm gonna send him first and then I'm gonna. Okay, that's why I'm like, you guys want to go because I don't know what to say. So it wasn't. तो हजरात जिन्होंने I kept looking on the side because I didn't know what to say. दोहे पढ़े, That's okay. Alright. अदाकारी को तरबीयत दी, इन सबका शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करने वाला कौन होता हूँ? इमाम अलैहिस्सलाम उनके दर्जात बढ़ाएंगे। मोमिनीन अब आहिस्ता आहिस्ता प्लाजे से डिस्पर्स हो जाएं। बहुत मेहरबानी। इंशाअल्लाह आइंदा जुलूस के लिए हम ज़्यादा वक्त लेंगे ताकि मोमिनीन ज़्यादा देर ठहर सकें और इबादत और मातम कर सकें। स्टिकर यहाँ मौजूद है। फिर मैं शिकागो में हम इस वक्त मौजूद हैं। यौम आशूरा के दिन यहाँ बहुत सारी मोमिनीन की तादाद बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और माशाल्लाह लोगों में
जलवा नज़र आ रहा है और इमाम हुसैन की याद को ताज़ा किया जा रहा है। वाक़या करबला की याद में हुजूम बहुत अच्छे तरह नज़र आ रहा है यहाँ पर। मतलब लाइक हर साल तादाद बढ़ती चली जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज 10 मरकज़ी जुलूस में बहुत से हज़ारों शिरकत लोगों ने की। मरकज़ी जुलूस में ह्यूमैनिटी के लिए पूरी आने वाली नस्लों के लिए मज़लूम के लिए एहतजाज आज यहाँ पे शिकागो में जुलूस आज ही नवाज़े रसूल को शहीद किया गया था हक़ के ऊपर, और रसूल के नवासे ने उस हक़ को बचाने के लिए अपनी जान दी। और आज उसी सिलसिले में हम शहर शिकागो में मरकज़ी जुलूस लेकर जमा हुए हैं। ये हमारी रवायत चली आ रही है करबला के पास से, जिसके दुआ बनी ज़ैनब ने कहा कि मेरे भाई को कौन होएगा। तो आज तक सारी कौम होती है और इमाम का अब मनाने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। हुसैन ने दीन और नमाज को बचाने के लिए अपने पूरे घराने को पेश कर दिया था। इससे बड़ी कुर्बानी की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं है। निसार हो गए छोटे बड़े तमाम बावफा ऐसा घराना हो नहीं सकता। और इसके साथ मैं एक शेर सुनाऊंगी। अदा न करते जो शब्बीर सज रहे तो फिर नमाज वहाँ ख़त्म हो गई। My name is Ali Hassan, and I'm here attending the Ashura Juloos procession here in downtown Chicago. We had over 3,000 people attend here today to remember the great tragedy of Karbala, the tragedy that basically ignited the perpetual revolution against evil. And this oppression is really started with the tragedy of Karbala 1400 years ago, when Yazid ibn Muawiyah basically tried to hijack Islam, just like ISIS today is trying to hijack Islam all over again. So remembering Imam Hussain is the way to fight oppression today, and inshallah it is a great appreciation, and we're all happy to reignite the Hussaini soch, the Hussaini thought process in fighting the Yazid of today. Thank you. My name is Shane Reddy, and I'm here in Chicago. We just ended the Juloos. It was one of the biggest Juloos, one of the biggest turnouts. We had a bunch of Muslims turn out to stand up and walk in front of Imam Hussain, stood up against oppression, and we had a lot of people who actually got to know more knowledge about what happened on this day and what happened on the day of Ashura. We had a lot of Muslims who actually came together to show respect and show their love for Imam Hussain. We hope there's more people who turn out next year and then we share the Juloos. Thank you. Hey, one more time. لبيك يا حسين Labbaik ya Hussein. One more time. لبيك يا حسين Labbaik ya Hussein. ناري आज शिकागो के अंदर आशुरा का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत करी और बीबी फातिमा और बीबी ज़ैनब के लालों का शहीद हुए उसकी अक़ीदत में यहाँ हज़ारों लोग शिरकत करी, और हर नस्ल, हर रंग और हर कातब फ़िक्र के लोगों ने इसमें शिरकत करी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे हैदरी या अली, लब्बैक या हुसैन। काटो न मेरा खुश्क गला, हाँ काटो न मेरा खुश्क गला, मैं हुसैन हूँ जी बब्बर
ठीक। तबले हुसैन असल में मर्द यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। आज शिकागो में बहुत अच्छा जुलूस का मासूम की तरफ से था, मासूम मोहब्बत की तरफ से लोगों ने बड़ी शिरकत की और बहुत अच्छे नवे प्यालिश ने, रियाज साहब ने और नज़र साहब थे, सलीम साहब थे, मक्ती के हजरात थे, उन्होंने शिरकत की। हमारे सदर मासूम के सदर सेक्रेटरी, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हर साल की तरह ये जुलूस निकलता रहे और कामयाब रहे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और यजीदियत का नाम ख़त्म हो, हुसैनियत का नाम बुलंद हो।